welcome to another episode of the Tech Mindset. Today we are again picking up the topic of the digital native organizations. We have already touched upon the subject in our previous episode. Digital native organization or enterprises, as they're also known as DNE or DNOs. When you look up for those on the internet, the few things that people speak about them is that they are much faster at scaling than traditional organizations, or even the organizations they are trying to move away from traditional way of doing business into more digital. You also see that these businesses are more customer-centric, and there is this culture of continuous innovation. But every time we talk about digital native organization, I think one of the few companies that always stand out for us is Amazon. So, Gautam, question number one. How and why has Amazon become such a benchmark for every organization globally? Yeah, I think very great introduction basically to digital native organization, because कोई भी introduction digital DNA जैसे तूने बताया वो Amazon के बिना अधूरा हो जाता। True. और इसको कई लोग Amazon effect भी कहते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं एक UK में काफ़ी बड़ी कंपनी उसके CEO से बात कर रहा था, और शी वॉज जस्ट टेलिंग मी दैट पिछले 8-9 साल में गेम चेंज हो गया उनके इंडस्ट्री में, और जबकि अमेजन और ऊबर उनकी इंडस्ट्री से है भी नहीं, फिर भी वो कहते कि उन्होंने कन्वीनियंस का जो बार है इतना बड़ा कर दिया कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन ही बदल, विदाउट एनीबडी नोटिसिंग और नोइंग सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी। जिसको एकेडमिक लोग एक पेपर है विच आई शेयर पुट इन द comments. Basically it's called Amazon effect. Academic people call it as Amazon effect of this. And Amazon effect जो है of this benchmark is not just limited to customer expectations etc. बहुत सारे एरिया में आ चुका है basically. So although this might be sounding like Amazon के बारे में तो बहुत कुछ पता है, but आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे कि what are those big things जिसके कारण Amazon benchmark है. Okay. क्या है वो बिग चीज है? So first thing is, like the CEO mentioned, convenience. वो हर business is on a business of convenience. Convenience and reliability जो है एक बहुत basic parameter, उन्होंने इसको completely बदल दिया. Especially जो लोग यहाँ पे Western world में रहते हैं, जैसे हम लोग UK में रहते हैं, कुछ भी ऑर्डर करो वो आ जाता है basically काफ़ी convenient तरीके से, जो भी आपको चाहिए almost मिल जाता है Amazon पे अवेलेबल है, प्लस वो अगले दिन डिलीवर भी हो जाता है मोर ऑफन देन नॉट बेसिकली, कंपेयर टू मेनी अदर रिटेलर्स जिसमें ये था नहीं पहले. एक्चुअली दिस वाज नॉट अ वेरी नॉर्मल और स्टैंडर्डाइज्ड थिंग. कन्वीनियंस टू सच अ लेवल, एंड ऑब्वियसली सब लोग Amazon Go का एग्जांपल देते रहेंगे बेसिकली एज अ शॉप जिसमें आप जाओ, चीज़ें उठाओ और निकल जाओ, अपने आप पेमेंट हो जाएगी. तो दैट सॉर्ट ऑफ दे हैव टेकन द बार ऑफ द कन्वीनियंस टू दैट लेवल. As well with Amazon Go, उसके तो एक आधा ही स्टोर्स हैं दुनिया में जो sort of concept कार की तरह. But then the basic convenience even in the delivery जो कर रहे हैं वो, या अगर ड्रोन से डिलीवरी करना है या किसी और तरीके से डिलीवरी करना है कि जो फास्ट हो सके और जो ईजी हो सके, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो Amazon लेकर आया है. Okay. So, जब हम convenience की बात करते हैं, I think convenience is at many levels, right? This is what you're trying to say. It is convenience of searching for the right product, convenience of choice between the vendors you would want to buy from, and convenience of when you want it to be delivered at your place, convenience of paying them. So it's basically a seamless journey of convenience, fostering consumerism. Fantastic. Okay. और क्या इसके पीछे इस कन्वीनियंस के पीछे की जो चीज़ जो हम नहीं देखते हैं बेसिकली, एंड दिस इज व्हाट Amazon इज अगेन अ बेंचमार्क फॉर, इज ऑटोनमस सिस्टम्स. कि पीछे जो उनके जो फर्स्ट ऑटोनमस, जैसे यू सेड की कन्वीनियंस ऑफ सर्चिंग स्टफ बेसिकली, राइट? तो उसमें जो ऑटोनमस सिस्टम्स लगे हुए हैं वो आपको आपने जो पीछे ऑर्डर किया है, जो पहले सोचा है जिन चीज़ों के बारे में, उस बेस पे ही आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट्स या रेलेवेंट
things. Second basis of second type of autonomous systems are in their warehouses. Basically, there they are delivering the convenience की फटाफट सामान निकल के deliver हो जाएगा. And not just convenience to us as end consumers, but also consumers to their partners and suppliers, जो उस warehouse में सामान रख सकते हैं कि आज अगर मैं I don't know कोई कप बनाने वाला हूँ तो मैं Amazon पे सामान बेच सकता हूँ basically, but मैं सामान ही नहीं बेच सकता हूँ, मैं Amazon के warehouse को भी यूज कर सकता हूँ to ship that stuff for my customers. So that's the level of convenience which is possible because of those autonomous systems. और उसके भी वो benchmark है. Everybody is now trying to build those robotic systems, those robotic sort of warehouses जहाँ से ये convenience deliver हो सकता है to people. ये पहले था नहीं, तो Amazon again as a benchmark in this area as a digital native organization. So कितनी सारी चीजें वो कर रहे हैं एक साथ, जो एक organization कई बार एक चीज कर लेता है बट बाकी चीज नहीं कर पाता है. मैं आपको वेयर हाउस का एग्जांपल देता हूँ. एक वेयर हाउस है ओकाडो करके कंपनी है जहाँ पर भी पूरे रोबोटिक सिस्टम लगे हुए हैं बेसिकली, बट वो कभी बेंचमार्क नहीं आता है Amazon की तरफ. मे बी वो बेंचमार्क आता है फॉर द रोबोटिक वेयर हाउस ओनली, बट Amazon देखिए कन्वीनियंस रिलायबिलिटी का बेंचमार्क है, ऑटोनोमस सिस्टम्स का भी बेंचमार्क है, और उसके अलावा कंप्लीटली लेफ्ट फील्ड एग्जांपल जो हम यूज करते रहते हैं AWS जो वेब सर्विसेज है, उसकी इंटरऑपरेबिलिटी का भी बेंचमार्क है बेसिकली. Right. क्योंकि जब जेफ बीजोस एक काफी 15-20 साल पहले का एक एनेक्डोट है जो भेजा है कि एवरी बिजनेस इज नाउ अ सर्विस बिजनेस, उसने अंदर में डिक्टेट भेज दिया कि जो भी आपसे कुछ भी काम करेगा वो सर्विस एक्सपोज करेगा दूसरों, और उसके बेस पे उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही बदल दिया जिससे उन्होंने एक बिजनेस क्रिएट कर दिया AWS का, जो आज बहुत बड़ा बिजनेस है basically. Probably the biggest business Amazon is running and the most profitable one. The most profitable one, interestingly, जो एक चल रहा है अभी, जो काफी लोगों को पता नहीं है, which Amazon is now running, is monetization of the data that they have. Huge business of becoming. अगर आप देखेंगे कि Facebook और Google अगर एड की कंपनियां है ना, तीसरी कंपनी अब आपको जब लिस्ट पे आएगी बहुत जल्दी, या इनफैक्ट लेट मी फाइंड द स्टैट्स, तीसरी कंपनी अब Amazon आएगी और वो उसमें भी अब बेंचमार्क बनेंगे. I'm just thinking of the value chain. Ad भी इनका, सामान भी इनका, और तुम्हारे पैसे भी इनके. तो वही Amazon को लग रहा है कि सारा सामान हम बेच रहे हैं, लेकिन इसके ऐड ये कंपनियां क्यों कर रहे हैं, जब इसके यूसेज का इंफॉर्मेशन कैसे लोग ऑर्डर करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये डेटा हमारे पास है, तो ऐड कंपनियों को हमारे पास आना चाहिए, राइट? The only reason they are going a little bit slow is because of the ethical concerns about this. They are very, very careful about what type of ads they want to show on their platform. बहुत आसानी से वो कोई भी ad नहीं आने देते. I know that because I know the person who leads the team basically who filters this stuff, that what type of ad can be placed there as. So Amazon is a benchmark, and they can become a benchmark on all of these things in even this service business. So if I were to ask you, name 3 things जो anyone can learn from Amazon and try to replicate either for their customers or for their own organizations, what would you say are those 3 things? Very, very interesting question. Basically, tech mindset क्या होना चाहिए? Tech mindset. सबसे पहली चीज तो ambition. Basically, because Amazon, how did it start as a digital native? It started as book बेच रहे थे. अगर उनका ambition नहीं होता कि नहीं बुक ही नहीं, मैं दुनिया के सारे प्रोडक्ट बेचूंगा, तो फिर तो अच्छे बुक सेलर बन के रह जाते, ऑनलाइन ई-कॉमर्स बुक सेलर बन के रह जाते. बेसिक वंस दे डिसाइडेड कि हमें सब कुछ बेचना है, उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो बहुत ही सिंपल है. बाय द वे, Amazon की स्ट्रैटेजी आज तक बदली नहीं है, which is very important for us as tech mindset people to understand. Once you have decided ki what is the strategy that is going to be, which we always will recommend that your strategy should be, how can you deliver or add business value by applying technology as technical people, there's nothing else to change. Rest falls in place from there. So their strategy is totally based on understanding that people want things faster, better, cheaper. Mm-hmm. बस इसी को वो ट्राई कर, जितनी भी इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो भी लगाना चाहते हैं वो इसी के ऊपर लगाना चाहते हैं, और कोई चेंज नहीं है. बहुत सारी कंपनी के देखेंगे हर दूसरे साल ना एक स्ट्रैटेजी का वो करते रहते हैं,
स्ट्रैटेजी रिफ्रेश करते रहते हैं। Amazon कभी स्ट्रैटेजी रिफ्रेश नहीं करते, वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी पे वो चलते रहते हैं बेसिकली। सेकेंड चीज़ जो है कल्चर, जो Amazon ने जो ये कल्चर बनाया एग्जैक्टली अराउंड द स्ट्रैटेजी टू बी इन सर्विस ऑफ customers. So we should learn the same thing, how to develop a cultural mindset as a tech mindset person to continue to delivering value. And for that, obviously, we have to improve ourselves. And one way of improving ourselves is to learn and share and collaborate with people like, like-minded people like us, basically, and come to this tech mindset podcast, obviously, or other ones, whichever you like. And the last one I would say is innovation. But when I say innovation, बहुत लोग उसको बहुत simplistically ले लेते हैं, like कोई shiny toy हम बना रहे हैं basically. But Amazon never does innovation just for the sake of innovation. अगर Alexa बनाया, जो अब देखिए Alexa का प्रोग्राम बंद हो गया है, इतना बड़ा shiny toy था जो सबके घर में आया था, Alexa as a smart speaker, जो एक game changing चीज़ लग रहा था, conversational, voice based, natural language. But when it was not delivering business, they shunned the program, basically. It may come back again in a different form after their learning. Yeah. But for now, that program has been shunned. So that innovation was not just done for innovation's sake and left out there. They are going to iterate and come back. So those are the big things that we also can learn. Like, अगर हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ट्राई करने के लिए मत ट्राई करो, सिर्फ टेक के लिए ट्राई मत करो, but make sure that is going to actually add value to us. Absolutely. Some really fantastic threads we touched upon today. One around strategy. लोग strategy क्यों बदलते हैं? Actually strategy होती क्या है? I'm sure this is something we should talk about. I can literally write a chapter about that, but it's for some other day. The other bit that we kind of touched upon is कि digital native organizations में जो ये innovation का culture है, what does that mean? At what point do you say that you are an innovating company, or are you just carrying on with what you know? इसी के अंदर things like transformations also come in. But doing a deep dive on all these topics, it's for another day. But thank you very much. आज का topic बस यही है. Thank you for joining with us on this one. Keep tuned in, and we will see you next time.